Bismillah Rahman Rahim. Assalamu alaikum warahmatullah. Peace and blessings upon you all. Dear students, today we talk about optimization techniques, job sequencing models. Okay, this is our topic in it. Um, so, what is a job sequencing model and how we proceed to solve the job sequencing model, right? So, let's first discuss some basic terminologies and then assumptions, and then what we are trying to do is we have to solve the n jobs on 2 and 3 machines. This is what is in our syllabus. Okay, we have some jobs, say job 1, job 2, job 3, and there can be two machines, machine 1 and machine 2, and we have to assign these jobs to these machines. Or we could have three machines and we have to assign these jobs, job 5 and so on, these machines, these jobs to these machines. Okay, so what is the deal here? So deal is that if you have an n jobs and you want to put it on an m machines, that you want to determine the sequence of jobs which minimize the total elapsed time. Say for example, you are this is a car manufacturing company, okay, and they are making there are lots of jobs for the uh, to make a car. Somebody is putting on bumpers, somebody is putting on engine, somebody is putting on somebody is painting, somebody is doing something, and you have to make sure the total elapsed time is minimum while using all those processing units together. Okay, so you have to remove the idle time. You should not do in such a way that, for example, there's a car and I have to put up a paint on a bonnet, but on the under the bonnet somebody has to work under the bonnet. So if we try to give them simultaneously this job, somebody is painting the bonnet and somebody has to go inside this, do something under the bonnet job, but this guy has to wait because this is painting, or this guy has to wait till this guy finishes doing under the bonnet job. So we have to remove the idle time. We have to minimize it. We cannot remove totally, but we have to minimize it so that we can assign the jobs in such a sequence. We produce such a sequence where this idle time is reduced at least. So that means total elapsed time will be minimum. So if you do like this, this is one expert, okay, who has to fix the engine under the bonnet and somebody is painting it, so he is waiting only, right? So we will not assign them in this manner. So when somebody who is fixing the engine, at that time we will not assign the guy who is painting the bonnet. Rather we give some other job to him, right? Not this job, so that there will be a less waiting time. Now, why we need some kind of an algorithm to deal with this? Because if there are two or three jobs just simply, and then you want to assign them, so you use the method of enumeration. You just see by your simple logic that this job will do this, it is waiting time, go for this and so on. But if the jobs are huge, even only 5, you can see if there are n machines and m jobs, the number of sequences we can produce is n factorial raised to power m. That means if it is a 5, we have a 5 machines and we have 5 jobs, then the sequences there, possible sequences there will be 5 factorial raised power 5. That is around 25 billion. It's a huge number. So we cannot do it using the just enumeration. We need some kind of a method. Okay, what is called as here we have what's called as a Johnson's method. And what are we trying to do is we are trying to once again give me pen, find the optimal sequence, because this is the optimization techniques. So here we, in the sequencing model, we are trying to find the optimal sequence. So what will be my optimal sequence? The optimal sequence will be which will reduce the total elapsed time. Okay, the total elapsed time, this has to be reduced. How it is done? By removing the idle time or by reducing the idle time. So idle time has to be reduced. So when we minimize the idle time, this will be done in such a manner that nobody is waiting for other guys. So
while somebody is doing it, if both of the guys are working on the same thing, we will not assign them simultaneously, we will assign them in a two different times, so that they will not wait for each other, right? Okay. As an example, I will say if there are two students, for example, just two students, I'm saying A and B, and they have to go to the principal's office, and one will go at a time. If I send both of them together to the principal office, now if one goes inside, B has to wait. So this is the wrong sequencing. So I will not, this is the job to be done. Okay, so say here principal is like a machine which is processing, doing something, and A and B are jobs. So if I send two jobs simultaneously to one machine, that is the principal, to process something, okay, then one will go, other has to wait. So if, say for example, A will take half an hour, so B has to wait for that half an hour. So I will not do like that. So I will send B to some other job at that moment. So that is what's called as a sequencing. So what are the basic terminologies here we have? Firstly, the number of machines, that's how many machines you are having. Okay, we will be dealing either with the two machines or three machines only, but in a real time there could be hundreds of machines. Okay, so what are the machines? There are some processing unit which will do some kind of a processing on the jobs, okay, or service facilities, we can say. uh, the jobs must pass it before, we can say that they are completed, they have to go through these processing units. Okay, and the processing time is the time required by each job on each machine. That is what is the processing time of that particular, for that particular job on that particular machine. And then the pressing order, this is the sequence in which machines are required for completing the job, because sometimes we need first machine 1, then machine 2, then machine 3, and so on to complete the job. And there can be the idle time of the machine, because if a machine is doing one particular job, then second job has to wait, that will be called idle time. Or say for example, I have to do on a, say, job A, machine, say machine, one second, if machine 1 is trying to work on a job A, for example, okay, or maybe say J1, it has to work on a J1, but J1 is occupied by machine 2. So machine 2 is working on the J1, okay, and machine 1 wants to work on a J1, so it has to wait, right? Um, so definitely that's the idle time of a machine. And what will be total time? Total time will be the first, starting the first job and completing the last job, including the idle time. That is the total time. यानी कि if for example, you are starting doing some work, you started work, then you sit idle, then you again started the work doing on that work, and you completed it, you finished it. So total time will be the job on processing and also the idle time. Okay, the first job, starting the first job and completing the last job, including the idle time. So all the jobs are finished. When all the jobs are finished with their idle time, how much time it will take is called as the total time elapsed. And there is one more thing here, which is the, that is the no passing rule. We have the, if you see the syllabus also, that is saying sequencing of n jobs on two machines and three machines with no passing. So we have a no passing rule. What does that no passing means? That you cannot just pass the half job to the other. Okay, so what does that mean is, machine, for example, it's a machine A and machine B, for example, okay, and there's a job. If job 1 has to do some amount of work on a machine A, it will not do the half work and pass it to the B, then come back. So no, there is no come back. It has to J1, the machine A को जितना काम इस जॉब पे करना है वो पहले पूरा करेगा, वो उसके बाद ये इसको पास करेगा टू द J2, जब आप J2 को काम करना है। ऐसा नहीं होगा कि J1 का हाफ काम हो गया तो एक ए मशीन पे हाफ काम हो गया, अब वो जा रहा है बी के पास, उसके बाद वापस आ रहा है, एंड सो ऑन. It will be not like that. Okay, you have to finish it, your whole processing on the A, then you pass on to the B. That's called no passing rule. That means you are not passing incomplete jobs. You are passing, बाद में तो जाना ही है B2 के पास, you have to pass from A to B, but doing half job on A and then going to the B, that is not allowed. So this is called as no passing rule. So what are the assumptions we are having here? They are, जो processing time आपकी machine का है, we know that, we have to know that, because
उसी से तो हमें पता चलेगा ना कि हम सीक्वेंसिंग कैसे करेंगे, बिकॉज इट विल बी काइंड ऑफ a shortest job first, right? So that they will finish it up. So that means we need to know the एक मशीन कितना टाइम लगाती है प्रोसेसिंग के लिए. ओके. दूसरा, अब जो टाइम लगता है एक जॉब को करने में, दैट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन सम अदर, सो अदर जॉब, राइट? सो एक मशीन जो काम करते हैं, कंप्लीट करेगी एक जॉब, उसको वो मुनहसर नहीं होती है दूसरे के ऊपर कि अब दूसरा पहले करेगा या उसने कैसे किया. इट हैज अ फिक्स्ड टाइम इंटरवल, जितना इसको टाइम लगता है उतना लगेगा, उसमें कम ज्यादा नहीं होगा. और एक मशीन दो काम साइमल्टेनियसली नहीं करेगी. देयर इज नो मल्टीटास्किंग. Okay, in these are the principal assumptions when we solve them. हाँ, और अब जब a job one is done on a machine 1 for example, and then it has to go to machine 2 for example. Okay, machine 2 पे अब काम करना है, जो इसमें टाइम लगता है from machine going from machine 1 to machine 2, we are not taking that into account, so we say that this time is negligible. Okay, and then there is a no passing rule. uh, each job once started on machine is to be performed up to completion on that machine, यानी कि आधा छोड़ के वो दूसरे मशीन के पास नहीं जाएगा. So that is no passing rule. These are our assumptions. There are a couple more assumptions कि order of completion का कोई ये नहीं है, significance नहीं है, क्योंकि कभी ऐसा भी होता है कि नहीं पहले यही काम आपको पहले करना है. इसमें वो नहीं है कि you can start any job any time. Okay, और जो ही मशीन आइडल होगी वो जॉब को पकड़ेगी. ओके, तो so you cannot wait without, if the machine is idle, you just start your job, so there is no waiting time in that. Now there are the types of job sequencing problems, that depends on how many jobs are there or how many machines are there, right? If you have for example n jobs and 2 machines, okay, so मान लीजिए आपके पास machine A and machine B है in the order A B. okay, तो उसका मतलब ये होता है कि पहले A पे आपको असाइन करना है, फिर B पे असाइन करना है jobs. Now there could be the n jobs to be processed on 3 machines in the order A B C, यानी कि पहले मशीन A को दिया जाएगा, फिर B को, फिर C को. Okay, or we could have n jobs to be processed on m machines, or 2 jobs to be processed on m machines, but we are dealing only with these 2 guys as per our syllabus. Okay, so let us deal with the processing of n jobs through two machines. Okay, if we have n jobs, many jobs, and you want to pass through the 2 machines, say A and B in some order, whatever the order you have. Okay, and you will do it in a first order manner. Okay, that the job which comes first will be given first, say in an order, first give to the A and then to the B. So A of I is the processing time for the ith job on machine A, and B of I is the processing time for the ith job on the machine B, and T is the total time. So what our motto or our objective is to minimize the elapsed time. Okay, total time जो आपका लगेगा, that you have to minimize, and this is done by the Johnson and Bellman. So we usually call it as Johnson's algorithm. So let's go through this now. So what is the Johnson's algorithm here? Okay, so in Johnson's algorithm, what we do is we select, first step 1 is to select the minimum processing time of all the AIs and BIs. और अगर आपका AI है, AFR, that AFR is the rth job, that particular job we are talking about, अगर वो है तो आप वो पहले करेंगे, और अगर B का छोटा है तो वो आप लास्ट में करेंगे. What does that mean? This means, so it means like this. So this is, say for example, this is machine A and this is machine B, and these are my jobs, and I have n jobs, and n is here equal to 5, and I have 2 machines. Okay, and I want to assign them in a way which will reduce the elapsed time, the processing time जो है ना, जिसमें idle time कम होगा, and all that. What we have, we have to minimize the total processing time. If we have the 5 jobs and the 2 machines, and in the assumption we know that if we have a job 1, what is the processing time of machine A and machine B? But if we know that, only then we can assign. Na, this is important. We should know what is the processing time of a machine for that job. जैसे जॉब 1 है, उसको मशीन ए पे 6 टाइम यूनिट्स लगते हैं, और मशीन बी पे 3 यूनिट्स लगते हैं. अब ये सेकंड्स है, मिनट्स है, आवर्स है, व्हाटएवर दैट इज, वी से 6 यूनिट ऑफ टाइम लगते हैं इसको. ठीक है ना.
तो अगर हम देखेंगे मशीन ए में जो स्टेप फर्स्ट हमारा है, वी विल ट्राई टू सी विच इज मिनिमम इन दिस jobs, and I'm seeing 2 is the minimum, right? And also in this I have to see not only on this, I have to see on in a both ways which is minimum. 2 is minimum in machine A also and also machine B processing time. So जो मेरा sequencing का ये बनेगा, ठीक है, if machine A वाला मेरा होगा minimum, that I will assign from the left side. अगर machine B का minimum होता, मान लीजिए 2 इसी साइड था, तो वो 2 में इस साइड देता फिर, ठीक है ना? तो इसके बाद मैं देखता हूं कि नेक्स्ट मेरा जो है ना वो 3 है मिनिमम, दैट इज फ्रॉम द मशीन बी, नॉट फ्रॉम द मशीन ए, बिकॉज यहाँ 4 है. सो मशीन बी वाला हमें राइट साइड असाइन करना है, दैट इज हियर. सो आई विल असाइन 3 हियर. सो दिस इज व्हाट आर वी ट्राइंग टू से. सो व्हाट इज द स्टेप फर्स्ट, कि सिलेक्ट द मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम आउट ऑफ ऑल ए आईज एंड बी आईज, यानी कि जो मशीन ए का प्रोसेसिंग टाइम है और मशीन बी का प्रोसेसिंग टाइम है, इसमें सबसे छोटा कौन है. अगर वो ए आर वाला सब्जेक्ट यानी कि ए मशीन जो है उसमें से निकला, देन यू डू द आर ऑफ जॉब फर्स्ट. ओके, तो पहले वही करोगे आप सीक्वेंसिंग चार्ट में, आप पहले वही करोगे मशीन ए का ए ऑफ आर. लेकिन अगर बी में से मशीन बी में से छोटा निकला, ए में से नहीं निकलेगा, तो वो आप करोगे एस अ जॉब एट लास्ट, बी ऑफ एस आप लास्ट में करोगे, यानी कि बी ऑफ एस विल बी असाइन टू द लास्ट. यानी अगर बी में से छोटा निकला वो लास्ट असाइन करना है, अगर मशीन ए में से छोटा निकला वो हमें पहले करना है, बिगनिंग में करना है. अब ऐसा भी हो सकता है कि टाई हो गया, देयर कुड बी अ टाई इन सिलेक्टिंग द मिनिमम ऑफ ऑल द प्रोसेसिंग टाइम. ओके, देन यू हैव टू डील द सिचुएशन इन 3 वेज. व्हाट आर द 3 वेज आर, देयर कुड बी 3 थिंग्स. यानी कि अगर आपका टाई पड़ गया, अब टाई पड़ सकता है आपको, जैसे जैसे यहां पर मशीन ए और मशीन बी है, फर्ज कीजिए इसमें हमारे पास जैसे यहाँ 2 है, तो यहां पर भी एक और 2 है, तो अब टाई पड़ गया, ये भी छोटा है ये भी छोटा है, ये एक सिचुएशन हो सकती है. या हमें टाई पड़ गया मशीन बी के अंदर, ये भी छोटा है और मान लीजिए 3 भी, यहाँ पर 3 और 3 है. सो जब मेरा छोटा देख रहा हूं 3, तो यहाँ पे 2 3 है, क्या ये लेना है या ये लेना है, ठीक है ना? या तीसरी सिचुएशन आ सकती है कि यहाँ भी 2 था और यहाँ भी 2 है, फर्ज कीजिए अब ये लूं या ये लूं. सो मेरे पास 3 सिचुएशंस बनती है. अगर टाई पड़ गया, जो मैं छोटा ढूंढ रहा हूं, जॉब प्रोसेसिंग टाइम जो मैं छोटा ढूंढ रहा हूं, उसमें इफ आई हैव अ टाई बिटवीन द 2 machines, either this could be tie between the same machine, either A or in a B, or it could be the tie between the machine A and machine B. So I have 3 scenarios. So here the first scenario is about that if there is a tie between machine A and machine B, यानी कि machine A there is some, say for example 2, and machine B there is also 2. Now who will you choose? Okay, then you will choose, because both are equal, AFR and BFS are equal. Okay, then do the R of job first and S of job at last. Then you have to assign both. In my assignment, I have to assign both. I will assign 2 in a front because of A and 2 in a back because of B. Okay, now there could be second scenario where there is a tie between the AIs only. So A machine के ही अंदर tie है, यहाँ पे 2 था, इसी के अंदर नीचे भी 2 है. Then I can choose any one. I will not choose both. I can choose this or I can choose this. So use only one once. So second scenario, the third scenario will be if you have a tie in the B eyes only. So B of S जो आपका है और B of T दूसरा जो आपका B में ही है, उसमें टाई लग गया, यानी कि बी मशीन में टाई लग गया. मतलब यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 3 था, यहाँ पर भी 3 है, फॉर एग्जाम्पल. सो यू कैन चूज आइदर दिस और आइदर दिस, दैट्स योर चॉइस. एंड बट यू हैव टू असाइन देम ऑन द लास्ट. When you're talking about the B's, you have to assign them on the last, and if you talk about A's, you have to assign up front. Does it make sense? Now when you are done with that, then you will eliminate that job which has already been assigned from further consideration, and you go back to the step 1 and do it again. Then you go to the step 1 again and do it again, the same process till all the jobs are finished. Let us do the example to get it properly. So the question is, suppose there are 5 jobs, each of which has to be processed on 2 machines, machine A and B, and order is given. So order is AB, you have to understand that order is AB. That means you have to first assign A then B. Okay, if it is BA, then you have to assign first B then A, but order is given, we have to understand the order. Processing times are given in the following table. This is the processing time of each and every job.
So if job 1, it takes 6 units of time on machine A, and the same job takes 3 units of time on a machine B. So common sense is I will not assign job 1 on a machine A, rather I will assign it on a machine 3. Same way is job 2, it has a 2 units of time on machine A and 7 on a B. So the same job 2 will take more time on machine B than on machine A. So it is common sense, I will try to find the minimum. Okay, that means which takes me the lesser time on the machine A, right? Now we have to find the sequence in which the jobs should be processed so as to minimize the total processing time. So total processing time should be minimum, that is we have to remove the idle time. Okay, so simple thing is we apply the Johnson's model here, and we have to first, because it's a, we have to first try to see the minimum job, whatever is the minimum job in A's and B's, and I'm seeing it is the 2 is the minimum job in the machine A. Then I will assign it to the first. I will put in a queue first because this is to be done first. Okay, if I will get in the machine B, then I will put it on last because I have the order of A, B. So B has to be on the last. A first, then B. So if I got a minimum in a B, then that will be assigned to the last, okay, here. But if it's a minimum in the A, that is to be assigned upfront in the beginning. Okay, and when you are done with this, then this job is to be removed. I don't have this job anymore because this is assigned now, 2 is assigned, so I have to remove it for further consideration. Now in the table I have only 1, 3, 4 and 5. Now as you could see, the next table we have the 2 is removed from that. Now I try to see which is minimum in the AIs and BIs, and I'm seeing 3 is the minimum, but it is the B because we have order A, B, so 3 is to be assigned to the last. Okay, 3 is to be assigned to the last, but we're not assigning 3, basically we're assigning the job. Okay, you have to understand that thing also. Here we got a little confusion, we're not assigning the 2, the processing time, we're assigning this job 2 here. Okay, same way we have a 3 here now. Now this 1, job 1 will be assigned to the last. So 3 was the lesser, so assign job 1 to the last, and then just simply remove this. So we have to remove this for further processing because this is done. Now job 1 is done, job 2 is done. Now among these, now this is the left out the table. Okay, and here I'm seeing which one is the smaller. So it's definitely the 4 is smaller, right? So 4 is smaller in this scenario. So 4 is to be assigned to the left, and this is to be removed. When this is done, we have that this will be the left out tables, which is lesser, the 5 is lesser. So 5 is to be assigned to the right, that means to the last. Okay, and this is gone, and now this is the last job which is to be assigned, and it will be here, and we have 2, 4, 3, 5, 1 as my sequence. Okay, and we have to, now this is my optimal sequence. Okay, and we have to see what is the minimum elapsed time from this table. Okay, before we move further, let me ask you a question, that is the cross check whether you're watching this video or not, that you have to answer this question in the comments below to certify that you are watching this video. So the question is, in which unit, you have to write unit 1 or unit 2, in which unit this sequencing model is in your syllabus. So is it in unit 1 or in unit 2? So write it in the comment and also with your roll number. Okay, now we try to, actually we have to get we have the optimal sequence. Now this is my optimal sequence, as you know, this is the optimal sequence. Now we have to see what is my total time, and I know the machine A, the job 1 takes 6 units and then 3 units, so I have to assign them. So I have put the original table here as well. So how we do that? So we are saying that job 1 on a machine A takes 6 units and then 3 units and so on. So I want to assign job 1 on the machine A as well as on the machine B to fix the things. Machine A will be doing something on a job 1 and machine B will be doing something on a job 1. I have to assign them in such a manner that there is no waiting time, basically. Okay, and the optimal sequence I got is this one. So I have to apply optimal sequence, and what I do is first is I will start assigning the machine A. So machine A comes first because I have the order A and B. So I have to assign on the machine A using this sequence. Then I will
assign these jobs on a machine B using the same sequence. And my uh, idea is that this is the optimal sequence, that this will remove the time of waiting time. So if you do it like this, then you will see that there will be a lot of waiting time because they have to wait for each other, but here the waiting time is minimum. So let us see how we do it. So we have to assign first job 2, so I'm assigning job 2, right? So I will use first the machine A. So what we do is we talk about first on the machine A, we assign all the jobs on a machine A using this sequence. So we start from the 0 time. So time in is 0 because I'm not waiting, this is the start time. And I have to assign the 2. Okay, the 2, this is the job 2. And job 2 on a machine A takes 2 unit of time, so it takes from 0 to 2 unit of time. So I say time out is 2, time in is 0, so it's not waiting. So time machine A will never wait because why? Because it is in order A and B has to wait, but A never have to wait. A will do all of this sequencing, but it has to do sequencing in such a manner that B should not wait, that B should have a less waiting time. Such a manner we will sequence the A. Okay, that is my sequence order. So what I do is I just, after the 2 is finished, I have to assign the job 4, and I'm saying job 4 is taking 4 unit of time. So 0 से शुरू हुआ, 2 में खत्म हुआ, so 2 के बाद इसको हम असाइन करेंगे, किसको? जॉब 2 खत्म हुआ, then we assign the job 4. Okay, so we start the job 4 at 2 units of time because 2 जहां पे जॉब 2 खत्म हुआ था उसके बाद मैंने जॉब 4 किया, तो उस 2 यूनिट के बाद मैं यहाँ पे स्टार्ट करूंगा। और लगते हैं कितने यूनिट्स? 4 यूनिट्स। 4 + 2 is 6, so total time elapsed will be 6 now. उसके बाद मुझे जॉब 3 असाइन करनी है। जॉब 3 का मुझे लगता है 10 यूनिट्स ऑफ टाइम। सो चूंकि 6 तक मैं जॉब 4 कर रहा था, सो 6 के बाद ही मैं शुरू करूंगा जॉब 3, ठीक है ना? और मुझे लगता है कितना यूनिट्स ऑफ टाइम? 10। सो 10 + 6 is 16 यूनिट ऑफ टाइम। सो 16 यूनिट ऑफ टाइम के बाद मेरा जॉब 3 खत्म हो गया, ठीक है ना? उसके बाद मुझे कौन करनी है? जॉब 5। 3 के बाद 5 करनी है, और उसमें कितना टाइम लगता है? 11 यूनिट्स ऑफ टाइम। सो 5 में कब करूंगा शुरू? जब मैंने 3 खत्म किया। So 3 खत्म किया because I have no pass. I cannot finish it half and go to the second job or something like that. I have to finish it full. So 3 को अगर 10 of time लगते हैं, वो 10 यूनिट देने हैं पूरे. That is the no pass rule. Okay. So 16 से मैं शुरू कर सकता हूँ, उसके बाद 5, क्योंकि 16 तक तो मैं बिजी था 3 में, जॉब 3 में। अब जॉब 5 को मैं 16 पे शुरू करूंगा, और उसमें कितने टाइम लगते हैं मुझे? जॉब 5 में 11 यूनिट्स ऑफ टाइम। So 16 + 11 that is gonna be 27. उसके बाद मैं जॉब 1 करूंगा जो कि पहली जॉब थी, यानी कि 6 जिसको मशीन यूनिट ऑफ टाइम लगते हैं। सो 27 से मैं शुरू करूंगा, 27 + 6 that is gonna be 33. सो 33 पे मेरा फिनिश होगा मेरा कौन? मशीन ए का काम। अब इसके बाद मैं असाइन करना शुरू करूंगा मशीन बी को ये जॉब्स, ठीक है? तो मशीन बी भी यही सीक्वेंस इस्तेमाल करेगी। तो पहले कौन सा इस्तेमाल होगा? 2। द फर्स्ट आई विल असाइन द 2, ठीक है? बिकॉज जॉब 2 आई हैव टू असाइन द जॉब 2 फर्स्ट। सो जब जॉब 2 मैं करूंगा यहां पे, लेकिन जॉब 2 उस वक्त जो है वो लगा हुआ है किसके साथ? मशीन ए के साथ। सो बी कैनॉट वर्क ऑन द जॉब 2, क्योंकि इस वक्त जब ये शुरू करेगा अपना मशीन बी काम, उस वक्त जब 0 टाइम था, 0 टाइम में जॉब 2 पे कौन मशीन काम कर रही है? दैट इज ऑन अ मशीन ए। सो आई कैनॉट असाइन द मशीन बी। मशीन बी हैज टू वेट जब तक कि जॉब 2 फिनिश होती है यहां पे। सो आई हैव टू वेट, मशीन बी हैज टू वेट दैट मच। सो आई विल स्टार्ट ओनली एट 2, आई विल नॉट स्टार्ट एट 0। व्हाई? बिकॉज एट 0 जॉब 2 इज असाइंड टू मशीन ए, तो वो तो बिजी है ना इसके साथ, तो मैं नहीं कर सकता, इसलिए आई हैव टू वेट जब तक फिनिश टाइम इसका नहीं होगा, जितना फिनिश टाइम इसका है। तो फिनिश टाइम 2 है, सो आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दैट ओनली। और मुझे जॉब 2 को करने में 7 यूनिट्स लगते हैं इन द मशीन बी। सो 2 + 7 is 9। सो 9 में फिनिश करूंगा मैं जॉब 2। सो हो गया जॉब 2 फिनिश, ठीक है? उसके बाद मैं जॉब 4 शुरू करूंगा। सो जॉब 4 जो है उसमें मशीन में 9 यूनिट ऑफ टाइम लगते हैं। सो 9 तक तो मैं बिजी था जॉब 2 के साथ, तो 9 से ही मैं शुरू करूंगा, जो यहाँ पे 9 था उसी से मैं शुरू करूंगा। और मुझे जॉब 4 में कितना लगता है? 9 time. So 9 + 9 is 18. So I get the 18 unit of time. After 18 unit of time, so that is I start 18 unit of time, I will start job 3.
सो जॉब 3 को कितना लगता है मुझे 8 यूनिट्स ऑफ टाइम, तो जॉब 4 हो गया। अब जॉब 3 को 8 यूनिट ऑफ टाइम लगते हैं मुझे, सो 18 से शुरू करूंगा, 18 प्लस 8 दैट इज 26, तो हो गया खत्म ये। उसके बाद 26 से मैं शुरू करूंगा यहाँ पे, लेकिन ये भी ख्याल रखना है यहाँ पे, देखिए ये भी एक चीज यहाँ पे ख्याल रखना है, देखिए क्या कि जब आपने ये वाला जब शुरू किया 9 से, ठीक है, यहां से देखना कि क्या ये अवेलेबल है, ये जॉब 4 अवेलेबल है भी कि नहीं है, क्योंकि ये अवेलेबल है, क्योंकि जॉब टाइम 6 तक ही जॉब 4 ए पर था, यानी कि यहां तो मैं जॉब 4 का असाइन कर रहा हूं 9 टाइम पर, सो 9 आवर्स में या 9 यूनिट ऑफ टाइम पे वो तो फ्री है, तो मुझे वेट करने की जरूरत नहीं है। इस तरह के यहाँ पे 16 यूनिट्स ऑफ टाइम पे जॉब 3 खत्म हो रही है मशीन ए पर, सो दैट मीन्स आई एम कमिंग टू इट एट 18 टाइम, सो 18 टाइम में ये फ्री है, सो मुझे कोई मसला नहीं है। लेकिन जब जॉब 5 में यहाँ पे करूंगा ना, देखिए जॉब 5 पे मैं जा रहा हूँ, जॉब 5 में जब मशीन बी पे कर रहा हूं मैं, सो मैं 26 यूनिट पे मैं खत्म कर रहा हूं जॉब 3, सो दैट आफ्टर 3 आई हैव टू डू द 5। सो जब मैं 5 पे आ रहा हूं यहाँ पे, लेकिन मैं देख रहा हूं कि जब 26 टाइम था उस वक्त जॉब 5 मशीन ए के पास ही है, क्योंकि 27 में फ्री हो रहा है ना, इट इज गेटिंग फ्री एट 27, सो व्हेन इट इज गेटिंग फ्री एट 27, सो आई कैन नॉट, मैं यहाँ पे फ्री हूँ 26 पे, अब मैं यहाँ पे 26 पे शुरू कर सकता हूँ अपना जॉब, लेकिन 26 टाइम पे जॉब 5 ए के पास है, सो आई हैव टू वेट up to 27, that means 1 unit of time I have to wait, so I will start my time for this at 27, not at 26। इनमें 18 पे ही था क्योंकि 18 पे वो फ्री थे, लेकिन यहां पे वो फ्री नहीं है, so I have to start at 27 जहां जब भी फ्री हो रहा है। और जॉब 5 को कितना लगता है मुझे 5 यूनिट्स ऑफ टाइम, सो 27 प्लस 5 दैट्स गोना बी 32। अब 32 पे मैं फ्री हूं, लेकिन मैं कर सकता हूं जॉब 1, जो मेरी लास्ट अब जॉब करनी है जॉब 1, आई कैन डू इट, मशीन बी कैन डू इट, बट एट 32 यूनिट टाइम अगेन इट इज बिजी, because up to 33 unit of time job 1 is busy with machine A, again I have to wait one more unit, so I cannot start it from 32, I have to start it plus 1 up to 33, so I have to start it from 33, so मेरा वेटिंग टाइम यहां पर भी एक लग रहा है, यहां पर भी एक लग रहा है, और यहां पे दो वेटिंग टाइम लग रहे हैं, तो कुल वेटिंग टाइम मेरे पास है 2 + 1 + 1 दैट इज 4 यूनिट ऑफ टाइम। जो वेटिंग टाइम मेरे पास है 4 आवर्स का है, या क्या यूनिट्स है, अगर आवर्स में है तो ये आवर्स है, 4 आवर्स मुझे वेटिंग टाइम लग रहा है इसमें जॉब मशीन बी को, तो टोटल टाइम मेरा लग रहा है 36 इसमें, ठीक है ना। सो अब ये जो हमारे पास है टोटल टाइम वगैरह ये कैसे हम निकालेंगे। सो आइडल टाइम जो मशीन ए का है दैट इज टोटल टाइम elapsed माइनस टाइम व्हेन द लास्ट जॉब इज आउट, सो लास्ट जॉब इज आउट इज 36, ओके, बिकॉज बोथ मशीन्स का, ठीक है ना। सो बिकॉज आई विल से द यहाँ इसने 33 पे खत्म किया, लेकिन अभी पूरा काम खत्म नहीं हुआ, अभी बी मशीन के ऊपर भी काम करना है, सो दैट मींस मशीन ए का ये आइडल टाइम होगा अब जब तक ये मशीन बी खत्म नहीं होती। सो जो टोटल आइडल टाइम मशीन ए का है वो टोटल टाइम इलैप्स्ड है दैट इज 36 द टोटल टाइम, 36 पे पूरा काम खत्म हो रहा है, ए मशीन का भी बी मशीन का भी, दैट इज में 36 आवर्स। और ये एक खुद कब खत्म हो रही है 33 पे, सो 36 माइनस 33 दैट इज 3 यूनिट्स ऑफ टाइम is my idle time for the machine A, okay। अब machine B का idle time क्या होगा, इसमें हमें क्या करने का हम इसमें ये फॉर्म लगाएंगे, या तो सीधे मुझे पता है कि यहाँ पे 2 यूनिट्स लगे यहाँ पे, और यहाँ पे 1 यूनिट लगा, और यहाँ पे 1 यूनिट लगा, ऐसे, ठीक है ना। लेकिन अगर फॉर्मूला के हिसाब से करेंगे, ठीक है, तो वो इस तरह होगा। एक मिनट मैं इसको क्लियर करूंगा पहले। देखिए यहां पे जब तक ये 2 यूनिट जो है, देखिए फॉर्मूला में जो मेरा होगा कि जो मैंने जॉब 2 कर रहा हूं, पहले मशीन ए पे कर रहा हूं ना मैं, तो जब तक ये फिनिश नहीं होता तब तक ये शुरू नहीं होगा, तो ये वेटिंग टाइम हमेशा होगा। मान लीजिए ये 10 तक हुआ था 0 to 10, सो इट हैज टू वेट फॉर 10, राइट। ये नहीं कर सकता, तब तक नहीं कर सकता जब तक कि ये जॉब फिनिश नहीं होगी। सो जो भी इसका क्या बोलते हैं इसको फिनिश टाइम होगा, जो जॉब फर्स्ट जो मेरा यहाँ पे एज पर माई सीक्वेंसिंग ऑर्डर जो मैंने यहाँ पे निकाला, ऑप्टिमम सीक्वेंस जो मैंने निकाली, इसका ऑप्टिमम सीक्वेंस, उसमें जो जॉब पहली जॉब जो हुई उसका जो टाइम आउट है वो इसको पहले ऐड करना है इन माय आइडल टाइम, राइट। सो व्हाट विल बी आइडल टाइम मशीन बी, टाइम एट विच द फर्स्ट जॉब इन अ सीक्वेंस फिनिशेस ऑन मशीन ए, दैट इज टू बी देयर। जब ये फिनिश होगा तभी तो ये शुरू होगा ना, तो ये इसका आइडल टाइम हो गई, जो इसका फिनिश टाइम है वो इसका आइडल टाइम होगा, क्योंकि इतने टाइम में वो वेट कर रहा है, इट कैन नॉट स्टार्ट।
ठीक है ना, प्लस time when the ith job starts on machine B minus time when the I minus job finishes on the machine B. अब ये क्या होता है, वो ये होता है कि देखें, जैसे ये यहां पे मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये कब शुरू हुई 18 पर, इससे पहली जो जॉब थी ये वाली I-1 वो कब खत्म हुई 18 पर, इन दोनों को माइनस करना है, जो निकलेगा वो वेटिंग टाइम होगा। जैसे यहां पे देखें, जो ith मशीन है 27, वो कब खत्म हुई, वो शुरू हुई 27 में, ठीक है ना। इससे पहले जो जॉब थी I-1 ये है ना, अगर मैं आई बात कर रहा हूं इसकी, तो ये I-1 है, वो कब खत्म हुई, इन दोनों को माइनस करो, 27 माइनस 26 एक 1 इंटू निकलेगा। इसी तरह का ये वाला ith प्रोसेस अगर ये है 33, I-1 है 32, इनको आपस में माइनस करें, ठीक है ना, तो वो निकलेगा आपका वेटिंग टाइम। इस सूरत में 18 माइनस 18 जीरो वेटिंग टाइम, 9 माइनस 9 जीरो वेटिंग टाइम होगा, ठीक है ना। तो हम शुरू करेंगे यहां से, क्योंकि इसका जो पहली जॉब जो होगा इसका वेटिंग टाइम हमेशा होगा यही जो इसका टाइम आउट होगा, जो मशीन ए का पहली जॉब का टाइम आउट। सो वी से टाइम एट विच द फर्स्ट जॉब, जो फर्स्ट जॉब है इन ए सीक्वेंस फिनिशेस ऑन मशीन ए, ये जो ऑप्टिमम सीक्वेंस है इसमें जो फर्स्ट जॉब है वो मशीन ए पे कब खत्म होता है, वो ऐड करेंगे हम एज ए आइडल टाइम फॉर मशीन बी, प्लस टाइम व्हेन द ith जॉब स्टार्ट्स ऑन द मशीन बी, हम शुरू करेंगे आई यहां से सेकंड जॉब से, क्योंकि पहले का हो गया, ये कब शुरू हुई, ith जॉब कब शुरू हुई, टाइम व्हेन द ith जॉब स्टार्ट्स ऑन मशीन बी माइनस द टाइम व्हेन द I माइनस वन जॉब है ना, ये वाला है ना I-1 जॉब फिनिशेस ऑन मशीन बी, ठीक है। सो इस तरह से निकलेगा, देखिए पहले ये मेरा 2 है, दैट इज द टाइम आउट जो पहली जॉब का है, सीक्वेंस ऑप्टिमम सीक्वेंस में जो पहला जॉब का फिनिश टाइम है, टाइम आउट है, वो मैं ऐड करूंगा जो भी होगा, प्लस अब मैं यहां से शुरू करूंगा, जॉब ith जॉब का स्टार्ट कब हो गया मशीन बी पे, दैट इज 9, माइनस I-1 जॉब कब खत्म हुई मशीन बी पे, दैट इज अगेन 9, 9 माइनस 9। अब मैं चलूंगा नेक्स्ट 18 पे, अब आई यहां पे आ गया, आई का मशीन बी पे शुरू कब हुआ 18 पे, दैट इज 18, I-1 दैट इज दिस वन, ये कब खत्म हुई 18 पे, सो 18 में से दैट मींस देयर इज नो वेटिंग टाइम। उसके बाद आई चलेगा इसके ऊपर, आई नाउ इज 27 जब शुरू हुआ, I-1 कब खत्म हुआ 26 पे, सो 27 माइनस 26, देन नेक्स्ट now I will go to the here, I is 33, जब I that means ith जॉब जो होगा वो मशीन बी पे कब खत्म हुआ, माइनस I-1 जॉब जो मशीन बी पे यहाँ पे शुरू हुआ, सॉरी, और यहाँ पे खत्म हुआ, सो दैट इज 33 माइनस 32, सो ये यहाँ पे 2 निकलेगा, ये 0 निकलेगा, ये 0 निकलेगा, ये 1 निकलेगा, ये 1 निकलेगा, सो दैट इज 2 प्लस 1 दैट इज 4 आवर्स इज द waiting time, idle time for machine B, and total time taken will be the 36 units of time for the full process to be done। लेकिन इस पूरी प्रोसेस का 36 घंटे लगेंगे हमें टोटल मशीन ए मशीन बी को सारे 5 जॉब्स करने में, और मशीन ए का आइडल टाइम जो था वो है कि ये कब खत्म हुई, ये 33 पे खत्म हुई और टोटल टाइम मेरा 36 लगता है, तो 3 लास्ट में इसको 3 यूनिट वेट करने पड़ेंगे, और इसको पहले जितना 2 यूनिट लगे खत्म करने, फिर यहाँ पे 1 यहाँ पे 1, टोटल 4 यूनिट इसको आइडल टाइम हो गया, और टोटल टाइम मेरे पास 36 लगता है, ठीक है जी। So with this we end this topic today. We will go for more examples tomorrow, and also we will try to do the end jobs on 3 machines tomorrow. Hope you got this lecture. You have to make a copy, and I'm explaining each and every step, but unless and until you don't have a copy and pen in your hand and just making notes, you will not understand properly. Okay, then see you next time. Until then.